गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पेस प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने 4 इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है इसरो के। तो कैबिनेट ने लगभग 22,750 करोड़ रुपए के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे ये इसरो के, इनको अप्रूवल दिया है। पहला तो सबसे फेमस है चंद्रयान 4, जो कि फोर्थ लूनर मिशन होगा इंडिया का। दूसरा है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको शुक्रयान भी कहा जाता है। ठीक है। सेकंड मिशन है आपका, जो कि इंडिया अपना इंडिजिनस स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो जो उसका फर्स्ट यूनिट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का, वो बनाया जाएगा। और जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो LMV-3 के बाद अब जो है सबसे लेटेस्ट व्हीकल होगा और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होगा। तो चंद्रयान 4 मिशन इंडिया का फोर्थ लूनर मिशन है, 2027 में लॉन्च होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रॉक सैंपल्स लेकर आने हैं लूनर सरफेस से अर्थ पर वापस सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद। और ये हमारे लिए फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज़ भी जो है अचीव करेगा कि कैसे हम बाद में 2040 के आसपास एक इंडियन को भी मून पर भेज सके और वापस अर्थ पे ला सके। ठीक है। अब जो आपका वीनस ऑर्बिटर मिशन है वो साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट होगा जो ऑर्बिट करेगा वीनस को, बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा विनेशियन सरफेस की और सब सरफेस की। तो स्टडी जो है करेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वीनस की। इसरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा डेवलपमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट के लिए भी और लॉन्च के लिए भी। और कहा जा रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि मार्च 2028 में तब इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। ये इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट है। फर्स्ट मॉड्यूल जो होगा वो इसका 2028 में लॉन्च किया जाएगा और जो बाकी का सारा प्रोजेक्ट है वो 2035 तक जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो ऑर्बिट करेगा अर्थ को 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस से। और ये एस्ट्रोनॉट्स को अलाउ करेगा कि वो 15 से 20 दिन वहाँ पर रह सकें। तो एक रिसर्च प्लेटफॉर्म देगा ये इंडियन एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को कि वो माइक्रो ग्रेविटी में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, माइक्रो ग्रेविटी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, अर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है। जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये LVM-3 का जो है वो एडवांस्ड वर्जन होगा, जो उससे नेक्स्ट वर्जन होगा बेसिकली, और 3 टाइम्स जो है ये कैपेसिटी रखेगा LVM-3 से। ठीक है। तो इसकी रीयूजेबिलिटी भी होगी, मतलब ये लो कॉस्ट होगा आपके लिए क्योंकि आप इसको दोबारा से यूज़ भी कर सकोगे। और ये डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 30 टन तक लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाने की होगी। ये 3 डेवलपमेंटल फ़्लाइट्स होंगी इसकी। तो जो है टेस्टिंग होगी बेसिकली, 3 बार इसको डेवलपमेंटल लॉन्च किया जाएगा फ़्लाइट्स के थ्रू। और 96 मंथ्स के अंदर इसको जो है वो लॉन्च करने का प्रोग्राम है। तो नेशनल और कमर्शियल मिशंस भेजना हो, चाहे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस भेजने हो, उन सब जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक, उन सब के लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगा। लूनर या इंटरप्लानेटरी एक्सप्लोरेशंस के लिए भी ये NGLV जो है वो हमारे को हेल्प करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने एक न्यू फॉर्मल नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू और मॉडिफाई करना चाहता है। तो इंडिया ने जो है वो कहा है कि एक रिव्यू होना चाहिए इसका, और काइंड ऑफ हम इसको रिवोक ही करना चाहते हैं 64 ईयर ओल्ड ट्रीटी को, रीनेगोशिएट करना चाहते हैं उसके बाद। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की है। और इस ट्रीटी के मुताबिक 3 रिवर्स जो कि रावी, सतलुज, ब्यास जो है वो इंडिया को दी गई, और जो बाकी 3 रिवर्स हैं सिंध, झेलम, चेनाब और सिंध, झेलम और चेनाब जो है वो पाकिस्तान को दी गई। इंडिया जो है अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर को फ्लो करने दे एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कंजम्पटिव यूज़। ये ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान को अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ इंटायर वाटर देता है, और जो आपके इंडस रिवर सिस्टम का, और सिर्फ 19%, 19.5% ही जो है वो टोटल वाटर्स इंडिया के लिए अवेलेबल है। तो इंडिया जो है इस पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना सकता है वेस्टर्न रिवर्स पर भी, जो कि अदरवाइज पाकिस्तान को एलोकेटेड है। और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी इस पर बनाए जा सकते हैं वेस्टर्न रिवर्स पर। मतलब हम उस पानी को स्टोर नहीं कर सकते, उस पर प्रोजेक्ट्स बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 9 जो है इस ट्रीटी का, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बताता है। तो वो कहता है कि जो भी आपको कोई डिस्प्यूट होगा तो पहले लेवल पर आपको जो है वो परमानेंट इंडस कमीशन पर जाना है। और अगर वो परमानेंट PIC जो है वो अनेबल रहता है रिजॉल्व करने में इशू को, तो सेकंड ग्रेड पर जाएगा
जिसमें कि वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा और उसको डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर वो भी फेल हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर थर्ड लेवल पर जाता है, जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसके चेयरपर्सन जो है वो वर्ल्ड बैंक ही अपॉइंट करेंगे। अब इंडिया ने कहा है कि वो इस ट्रीटी का रिव्यू चाहते हैं। इंडिया ने जनवरी 2023 में भी यही नोटिस भेजा था, जब पाकिस्तान ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब दोबारा से इंडिया ने फॉर्मल ये नोटिस भेजा है कि हम इस ट्रीटी को रिवोक करके रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। इंडिया ने कहा है कि 1960 से लेकर अभी तक जो है पॉपुलेशन चेंजेस हो चुके हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ चुके हैं, इंडिया को क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी जो है वो इस ट्रीटी के लिए जो है वो सही नहीं है। इंडिया ने जो है एक्चुअली अभी क्या हुआ था कि किशन गंगा और रतले जो प्रोजेक्ट थे, उसको पाकिस्तान ने कहा कि ये वॉलेट कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, जबकि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट थे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जिसमें कोई हम रिवर फ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि अलाउड है हमें बनाना, ठीक है। लेकिन इस मामले को पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सपर्ट पर जो है वो लेके जाने लगा, और उसके बाद डायरेक्टली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने लगा। तो इंडिया ने कहा कि आप सिक्वेंशियल जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करो। पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो आपस में जो है वो इशू को रिजॉल्व करें, पहले कोशिश करें, फर्स्ट स्टेप जो है यही है। लेकिन पाकिस्तान ने कोई डिस्कशंस नहीं की 2017 से 22 के बीच में, और इसीलिए जो है इंडिया जो है वो अब इस ट्रीटी को ही जो है वो ख़त्म करने के लिए और रीनेगोशिएट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनपीएस वत्सल्य स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली जो है एनपीएस वत्सल्य स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि एक्सटेंशन है नेशनल पेंशन स्कीम की ही, लेकिन ये फोकस कर रही है चिल्ड्रन पर। तो एलिजिबिलिटी अगर हम देखें एनपीएस वत्सल्य की, तो जितने भी माइनर सिटीजन्स हैं बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, वो इसके लिए एलिजिबल है। बोथ चाइल्ड और पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। अकाउंट जो है वो माइनर के नाम पर खुल सकता है। स्कीम जो है वो पीएफआरडीए द्वारा कोई भी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, चाहे मेजर बैंक्स हों, इंडियन पोस्ट हो, पेंशन फंड्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों, इनके थ्रू जो है परचेज़ की जा सकती है या ओपन की जा सकती है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसमें साल का 1000 रुपये डालना होगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जब एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लेगा माइनर, तो ऑफ कोर्स उसको नॉर्मल एनपीएस अकाउंट बन जाएगा वो। और ये वत्सल्य अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल्स भी अलाउ होंगे। 25% जो कॉर्पस है वो विड्रॉ की जा सकती है एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। जब चाइल्ड जो है वो 18 ईयर्स की एज अचीव कर लेता है, तो अगर 2-2.5 लाख तक का कॉर्पस है वो तो आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा का है, तो आप सिर्फ 20% विड्रॉ कर सकते हो, 80% को आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, मतलब उस माइनर की, तो जो सारा कॉर्पस है वो नॉमिनी को मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायो राइट स्कीम। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 2 अम्ब्रेला स्कीम्स को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जिनको मर्ज कर लिया गया है अब। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम का नाम है ये। इनोवेशन, बायो एंटरप्रेन्योरशिप फॉस्टर करना और इंडिया की पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर जो है वो लेकर आना आगे, ये बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स हैं। और स्कीम के 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं: बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फंड्री, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है कि वो पोटेंशियल ऑफ बायो इनोवेशन को जो है वो एक्सप्लोर करे, ताकि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी में डेवलपमेंट्स की जा सके, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम आशा। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम जो एग्रीकल्चर की है उसको एक्सटेंड करके 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है रेम्यूनरेटिव प्राइजेस देने के लिए फार्मर्स को। इसमें 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। स्टेट्स जो है वो कोई भी कंपोनेंट को चूज़ कर सकती हैं या फिर तीनों को भी चूज़ कर सकती है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम मतलब फिजिकली प्रोक्योरमेंट की जाएगी पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल नोडल एजेंसीज द्वारा, जिसमें प्रोएक्टिव रोल निभाएंगी स्टेट गवर्नमेंट्स। तो नाफेड हो चाहे एफसीआई हो, वो ये पीएसएस ऑपरेशन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में कर सकती हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर या लॉसेज होंगे प्रोक्योरमेंट के समय, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एज़ पर नॉर्म्स जो है वो बॉर्न करेगी। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम पेमेंट स्कीम, इसके अंदर क्या होगा, जितने भी ऑयल सीड्स को एमएसपी जिन पर नोटिफाई की जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर फार्मर किसी
जो प्री रजिस्टर्ड फार्मर है वो इसको सेल करता है इन ऑयल सीड्स को, तो अगर उसको एमएसपी नहीं मिलती तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा जो उसके सेलिंग का और जो उसके एमएसपी का, वो डायरेक्टली उस रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में उसके फार्मर के डाल दिया जाएगा। ठीक है, कोई फिजिकली प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी गवर्नमेंट इसमें, बस जो अमाउंट है जो बेसिकली उनको रीइंबर्स की जाएगी जो भी उनका लॉस हुआ है एमएसपी से कम पे उनको बेचना पड़ा है अगर। ठीक है, तो पायलट एक और भी है इसमें कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम का, जिसके अंदर क्या है कि जो ऊपर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसके अंदर वही सेम स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन दिया जाएगा कि वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स या एपीएमसीज में प्राइवेट प्लेयर्स से जो है फार्मर्स अगर उसके साथ डील कर रहे हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स उनको रीइंबर्स करे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं उन्होंने रिसेंटली डेटा बेंचमार्किंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो लॉन्च किए हैं ताकि इन्वेस्टर्स को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जा सके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते क्या हैं? तो ये कंपनीज होती हैं जो कि फाइनेंस या इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट को ओन या फिर फाइनेंस करती हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या होता है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड में अपना पैसा पूल कर देते हैं, फिर उस पैसे को ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ से जो भी इनकम जैसे कि रेंट जनरेट होता है तो जो है जिन्होंने जिन्होंने पैसा इसमें पूल किया होता है उनको एक तरह से रिटर्न की तरह वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई ये खुद रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं कि जो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं ये खुद प्रॉपर्टी बनाते हैं या फिर रीसेल करते हैं। ये बेसिकली बस उन प्रॉपर्टीज़ में जिनमें जिनमें फंडिंग की ज़रूरत है वहाँ पर अपना पैसा डाल देते हैं और फिर जो उनको उनके शेयर का रेंट आता है वो जो जिसने इन्वेस्टर ने पूल किया होता है फंड उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनको पब्लिकली ट्रेड भी किया जाता है स्टॉक्स की तरह, तो इसलिए ये हाईली लिक्विड है। तो ये 2014 में गवर्नमेंट ने स्कीम अलाउ कर दी थी ये, और इसको सेबी जो है वो रेगुलेट करता है। ऑफ कोर्स ये जो रीट्स हैं ये एग्रीकल्चर लैंड या फिर जो वेकेंट लैंड है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया जैसे कि एक ट्रांसमिशन लाइन लिटिल रैन ऑफ कच्छ में। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? एक स्टेचुटरी बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है गवर्नमेंट के डिसीजंस को जो है वो गाइड करने के लिए ऑन मैटर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स भी देता है ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। तो 47 मेंबर कमेटी होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट उसको जो है वो एज वाइस चेयरपर्सन जो है वो लीड करते हैं। तो जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एज मेंबर्स होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें नॉमिनेट करती है 10 मेंबर्स जो कि एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल टर्म में ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी जो कमेटी ऐसे खुद तो नहीं मिलेगी बार बार, तो इसके लिए प्रैक्टिकल टर्म्स में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है जो कि ये सेम फंक्शंस करती है ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल कमेटी। ठीक है, और ये कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी है ये हर 3 महीने में एक बार मिलती है, और ये एक तरह से जो भी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जिनमें प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल देने हैं वो आगे जो है वो मेन कमेटी के लिए प्रिपेयर करके रखती है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is space projects approved by Union Cabinet. This topic is important for your science and tech section. So Union Cabinet has recently approved 4 important space projects to be launched by the Indian Space Research Organization in the near future. And for that, 22,750 crore rupees have been set aside for the developmental cost of these 4 programs. So the first one is the very famous one, Chandrayaan 4, which will be the fourth lunar mission of India. The second will be the Venus orbiter mission, or it is also being called Shukrayaan. The third one will be the construction or the building of first unit of India's indigenous space station called as the Bharatiya Antariksh Station. And the fourth one is the most important one, that is the next generation launch vehicle, which will be the next generation of LVM-3, and it will be much wider in scope. Okay, so what is Chandrayaan 4 mission? It is India's fourth mission to the moon, and it is slated for launch in 2027. And this objective of this mission is to bring back rock samples from the lunar surface back to the Earth after a soft landing. And the mission will achieve the foundational technologies also, which will help us or which will help India to land
an Indian on the moon by 2040 and return safely back to the Earth. So what is Venus orbiter mission? So it is an orbit. It is envisaged as a scientific spacecraft which will orbit the planet Venus for better understanding of the Venusian surface and the subsurface. It will also study the underlying causes of the transformation of Venus, and ISRO will be responsible for the development of spacecraft and its launch. And the mission is expected to be accomplished on the opportunity which will be available during the March 2028 period. Okay. So, what is Bharatiya Antariksh Station? It is India's most ambitious space project, and the first module of this Bharatiya Antariksh Space Station or Bharatiya Antariksh Station has been targeted for launch in 2028, and it will complete the entire project by 2035. So, the aim of this mission is to establish an Indian space station which will orbit 400 km above the Earth's surface, and it will allow astronauts to stay in orbit for 15 to 20 days. So it will be a massive 52-ton machine, and it will serve as a research platform for Indian astronauts and scientists to conduct experiments in microgravity, astronomy, and Earth observation. Okay. So what is next generation launch vehicle? It will have the 3 times present payload capacity with 1.5 times the cost compared to LVM-3, and it will have reusability, so that's why it will result in low cost access to space. Okay, so it is designed to have a maximum payload capability of 30 tons to low Earth orbit, and NGLV will demonstrate the 3 development flights, and will have a target of 96 months, or that is 8 years, for the completion of the development phase. So this NGLV will enable national and commercial missions, including the launch of the human spaceflight missions to Bharatiya Antariksh Station, and lunar and interplanetary exploration of missions will also be facilitated by NGLV in the future. Okay. So the next topic is Indus Water Treaty. This topic is important for your international relations. So India has sent a new formal notice to Pakistan seeking to review and modify the Indus Water Treaty. And basically India wants to revoke this treaty and renegotiate it with Pakistan. So this treaty is a water distribution treaty between India and Pakistan, which was brokered by the World Bank. And according to this treaty, the 3 rivers, Ravi, Satluj, and Beas, they were given to India, and the 3 other, Sindh, Jhelum, and Chenab, were given to Pakistan. Okay, so India is under obligation to let the waters of western rivers flow, except for certain consumptive use. So this treaty allocates approximately 80% of the entire water of the six river Indus system, and reserves for India just the 19.48% of the total waters. So India can construct storage facilities on western rivers of up to 3.6 million acre feet, which it has not done so far. And this treaty also permits run of the river projects on western rivers, subject to specific design and operation criteria. But India is required to provide Pakistan with prior notification for the same, okay, including the design information. So Article 9 of this treaty provides for the dispute resolution mechanism, which is graded at 3 levels. At the first level, either party has to inform the other side if they are planning projects on the Indus River system. The process will be done at the level of Permanent Indus Commission, and if PIC is unable to resolve the question in contention, the question will become difference, and then it will go to the second level. And at the second level, World Bank will appoint a neutral expert to resolve this difference. And if that neutral expert also fails to resolve this issue, then this matter will go to the Court of Arbitration, whose chair will be appointed by the World Bank. Okay. So India has said that the time has passed now, and there are concerns regarding population, demographic changes, and environmental issues have emerged. India also needs clean energy development to meet its emission targets, and there is also impact of cross-border terrorism on this Indus Water Treaty. So for that, India already sent a notice to Pakistan in January 2023 to amend this 1960 treaty, and we have cited the cross-border terrorism as one of the important reasons for demanding the reassessment of this pact. So apart from that, Kishan Ganga and Ratle projects, which India is constructing in Jammu Kashmir, uh, was taken as unacceptable by Pakistan, even though these projects are just run of the river projects, and they are made to generate electricity without obstructing river flow. So what happened is that
Pakistan objected to these two hydel projects, and they initially sought a neutral expert, which is the second grade level, to address this concern. But later they proposed that we should go directly to the third grade of PCA. India objected this. India said that we have to follow the sequential dispute resolution mechanism, and for that, World Bank also said that both countries should resolve this issue amicably. But Pakistan did not engage with India between 2017 and 2022 period. That's why India wants to revoke this treaty and renegotiate it with Pakistan. So the next topic is NPS Vatsalya scheme. This topic is important for your economy section. So Union Finance Minister has officially launched this as NPS Vatsalya scheme. So basically it's an extension of the existing national pension scheme but focuses on children. So all minor citizens below the age of 18 years will be eligible for this scheme, but both the child and the parent must be Indian citizens. Account can be opened in the name of minor, and the scheme can be opened at any point of presence which is regulated by PFRDA, like any major bank, Indian Post, pension funds, and online platforms. So the subscriber has to make a minimum contribution of 1000 rupees per annum, and there is no limit on the maximum contribution. On attaining the age of majority, the plan can be converted into a normal NPS account, and after 3 years of opening this NPS Vatsalya account, partial withdrawals are also allowed. For example, 25% of the corpus can be withdrawn for specific purposes like education, medical treatment for certain illnesses, or even disabilities up over 75%. Once the child attains the age of 18, the corpus of up to 2.5 lakh can be withdrawn entirely, but if it exceeds that amount, then 20% can be withdrawn, and rest 80% has to be used for annuity purchase in the NPS. In the unfortunate event of a death of subscriber, the entire corpus will be given to the nominee. Okay. So the next topic is bio right scheme. This topic is important for your environment section and also your economy section. So Union Cabinet has approved the continuation of the two umbrella schemes of Department of Biotechnology and merged them into one scheme called the Biotechnology Research, Innovation and Entrepreneurship Development. So the aim is to foster innovation, promote bio-entrepreneurship, and strengthen India's position as a global leader in biomanufacturing and biotechnology. The aim is to accelerate research and enhance product development. So this scheme will have three broad components. First is the biotechnology R&D, industrial and entrepreneurship development, biomanufacturing and biofundry, which is a new component under this new scheme. So the Government of India aims to harness the potential of bioinnovation to tackle national and global challenges like healthcare, agriculture, environmental sustainability, and even clean energy. So the next topic is PM Asha. This topic is important for your economy section. So Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. This scheme has been extended by the Union Cabinet recently till 2026 period. So this scheme has three components, and any state can choose whichever one they wish to implement. First is the price support scheme, in which physical procurement of pulses, oil seeds, and copra will be done by central or nodal agencies with the proactive role of state governments. So NAFED FCI will take up these operations, and the procurement expenditure and losses due to procurement will be borne by the central government as per norms. Then the second one is the price deficiency payment scheme, in which the idea is to cover all oil seeds for which MSP has been notified. So direct payment will be given in case the difference between MSP and selling or model price is there to pre-registered farmers. So all payments will be done directly to the registered bank account of that farmer, and this scheme does not involve any physical procurement of crops. Then there is the pilot of private procurement and stockist schemes, in which for oil seeds, states will have the option to roll out this scheme on a pilot basis in selected districts or APMCs involving the participation of private stockists. So this scheme will allow private players to participate in the procurement of crops, and like the previous scheme, the states can then um, uh, uh, they can reimburse the amount or difference amount which the private players are unable to pay to the farmers in case of low payment than MSP. Okay. So the next topic is real estate investment trusts. This topic is important for your economy section. So Indian Real Estate Investment Trust Association has recently launched this data benchmarking institutions to provide investors with detailed information on real estate investment trusts. So what is this real estate? What are these real estate investment trusts? So these are the companies which own or finance income producing real estate across a range of property sectors. So this allows the investors to pool their funds and invest in various real estate projects. So basically they function like a mutual fund for real estate investments. They do not develop any real estate
properties to resell. They basically buy and develop properties primarily to operate them as part of their own investment portfolio. So basically, uh, you all pool funds, and you invest in a property which is being or a building which is being constructed, and the rent which will be derived from that building will be distributed in the share of your investment, because you have pooled the funds for the investment. So these REITs are basically publicly traded like stocks, and they which makes them highly liquid as well. So REITs were introduced in 2014 and they are regulated by SEBI. So REITs cannot invest in agriculture land and vacant land. Okay. So the next topic is National Board for Wildlife. This topic is important for your environment section. So the Standing Committee on National Board for Wildlife has recently cleared the projects such as transmission line in Little Run of Kutch. So what is National Board for Wildlife? It's a statutory board constituted by the central government under the Wildlife Protection Act of 1972. It is responsible for guiding the government's decision on matters which are related to wildlife conservation and issuing approvals for projects in protected areas. So it's a 47-member committee which is headed by the Prime Minister, and the Minister of Environment is the Vice Chairperson. So in addition to the offices and institutions which are directly involved, the NBWL also has the Chief of Army Staff, Defense Secretary, Expenditure Secretary to the Government of India as its members. So further, the central government also nominates 10 members who are eminent conservationists, ecologists, and environmentalists. But every time this NBWL will not meet themselves because it is a very heavy body. But to address the issue in practical terms, a standing committee has been made and the tasks have been delegated to them, which is empowered to carry out the same functions. So this standing committee also makes recommendations on the setting up of and management of national parks, sanctuaries, and other protected areas, and on other matters which are related to restriction of activities in those areas. So this standing committee ordinarily meets once in 3 months. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.